Hi guys, a very good morning to all of you. I'm Saba, your English faculty at Oliveboard. Good morning Sanju, good morning everyone. So guys, quickly join the session so that we can start this editorial. सभी लोग quickly फटाफट से session को join कर लीजिए. Okay, good morning Pawan, good morning everyone. So just let me know if I'm audible and visible to you all. एक बार फटाफट से confirm कर दीजिए if I'm audible and visible to you all. Good morning Arnav, I'm very good. I'm good. What about you all? I hope that you all are good. ओके सो वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन. आज के सेशन में आपको कुछ चीजें स्ट्रेंज दिखेंगी. ओके सो क्विकली ज्वाइन इन द सेशन गाइस सो दैट वी कैन स्टार्ट. गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग एवरीवन. So today I have started the session on time. Okay. So without any delay, I have started the session. So you people also join the session quickly. So if I talk about yesterday's homework, the homework that I received, Sabri, Tina, Niku, Ankita, Sanjeev Kumar, Sanju Das, Guka, Dayanidhi, मधुरिमा, कविता, नॉटी, विनोदिनी, अर्जू, गोथामी, जिया. सो ऑल दीज होमवर्क्स आई रिसीव्ड. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने किया था बट आई डिडंट रिसीव. What happened to you or no? No, I didn't receive even your homework. Yesterday, I didn't receive your homework. Editorial homework, I didn't receive. Okay. So, if you guys have done the homework, but I couldn't receive, so sometimes it shows. Like yesterday, also when I was doing the correction and I was marking, I was writing my remarks. So it was showing that your homework is, your comment is not sent. Okay. So if you guys see that thing, तो थोड़ा सा words में कुछ modification वगैरह करके उसको आप फिर से post कर दिया करिए तो definitely it will take. Because I tried twice or thrice, then successfully it was posted. Okay. सो वो नीचे आपको देखेंगे, आपकी लिंक आ जाती है कि मतलब होमवर्क पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. सो इन केस इट डिडंट गेट पोस्ट, सो जस्ट ट्राई टू डू सर्टेन मॉडिफिकेशंस, कॉमा, पंक्चुएशन, कुछ भी मॉडिफिकेशन करके ट्राई टू रीपोस्ट इट, तो डेफिनेटली इट विल बी विजिबल आई गेस. ठीक है, दैट आई फेल्ट यस्टरडे, कल मैंने ये फील किया था. नाउ गाइस क्विकली ज्वाइन द सेशन, सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल. मैम माइन क्यों नहीं यूज कर सकते गीता? बिकॉज माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. ओके, so after pronoun you cannot use noun. So mine is a positive adjective. जैसे if I say mine pen, so mine pen is wrong because pen is noun. So noun and pronoun, like pronoun we use in place of noun, not with noun. Okay, so mine pen is wrong. You will say my pen, or you will say this pen is mine. This pen is mine. Couldn't attend, not attended. Couldn't attend previous sessions, but I will definitely try to watch. Okay. So no worries. If you guys have missed some of the sessions, to please do watch the recorded one. Okay. इस week में complete कर लीजिए. Tomorrow is Sunday, so try to complete all those. ठीक है? Because it's no, you cannot say my dear. मैंने कितनी बार बोला है, after modal we always use V1 form. So you cannot say couldn't attended. ठीक है? It is always could not attend. I could not attend previous classes. Okay. So these are basic things. Please keep these things in mind. So I hope you all have liked this session. Please एक बार session को सभी लोग like कर दीजिए, share कर दीजिए, subscribe to our YT channel. Those who are new, जो लोग first time आए हैं, तो एक बार फटाफट subscribe कर दीजिए. It is normal. No, fever हो गया तो it is normal. Okay. Winter में हो जाते हैं. Every second person is suffering in winter. So nothing to worry about that. Take care. Tomorrow is Sunday, take rest. So you will be fine on Monday. Today's quote is on loving yourself. देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू बी सक्सेसफुल. ओके, लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू लाइन. द डे यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, द डे यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ. देखिए जितना ज्यादा आप खुद से आपका अटैचमेंट होगा, यू हैव अटैचमेंट फॉर एवरी अदर थिंग एक्सेप्ट योरसेल्फ. बिकॉज इफ यू लव योरसेल्फ, you will follow good routine, you will take care of your health. Then if you love yourself, then definitely you will try to do something out of the box to be successful, to be what. So एक बार मतलब the day you start loving yourself, every other thing will start falling into line. See, it happens most of the time that we chase after so many things and we forget our own selves. Or the day you start taking care of your own self, you will gradually feel that everything else has started falling into line. Okay, it has started falling into line.
You really have to love yourself to get anything done in this world. So ये भी बहुत different आपके लिए thought है, but very very important guys, because ये सारी चीजें generally हम लोग honesty, integrity इन सब चीजों के पीछे of course there are so many quotes, but you have to love yourself also, okay? So, if you want to do anything, if you want that anything in this world can be done for you, if you want to achieve anything in this world, so the most important thing, the first step is to love yourself. Because अगर आपका खुद से ही attachment नहीं होगा, तो आप ये success वगैरह किसके लिए ले रहे हैं? For yourself, for your family. So the first thing is you, और उसके बाद आप अगर सही हैं, तो of course your family and everything will be okay. So loving yourself means taking care of your health also. It is not being narcissistic. Now, Neeraj, narcissist doesn't mean love oneself. Narcissist basically means obsessed with oneself. Obsessed का मतलब होता है extreme love for oneself, that is always negative. किसी भी चीज का जो extreme होता है ना, excess of anything is always bad. So I'm not talking about being narcissist, because narcissist is not the person who loves himself. We all love ourselves. I love myself very much. So it doesn't mean that I'm narcissist. Narcissist means when you get obsessed with yourself कि आपको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है. So then you become narcissist. So try to draw a line between loving yourself and being narcissist. So I'm not talking about being narcissist because it is a negative word. I'm just talking about taking good care of yourself. So I hope you got it. Okay. The day you will start loving yourself, that day you will get up early in the morning. सबसे पहला काम आप करेंगे, you will get up early in the morning because you will try to keep yourself fit. और जब सुबह उठेंगे तो of course you will watch editorial also. So all these things are interconnected. Right? Now, glimpse of today's session. What are the things we are going to do today? So we will start with the revision session. Yesterday we saw so many good vocabs, idioms and everything. So we will revise all those things. Then we have vocabs of today's session. Okay. Idioms and phrases we have, phrasal verbs we have, complete analysis, grammar learning, tone objective and practice exercise. That is again homework. So everything is okay, but आज के editorial में कुछ आपको different दिखेगा. ठीक है? अब वो क्या different दिखेगा? That is going to be surprise. एक्चुअली वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता, बट आई ट्राई टू मॉडरेट इट. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. नाउ क्विकली लेट मी नो इफ यू गाइज आर रेडी फॉर द रिविजन सेशन. एवरीवन इज रेडी फॉर द रिविजन सेशन. No, do not post your homework right now, no, because right now I won't be able to concentrate on homework. या बाद में हम मेरे को दे सकते हैं, हो गया होमवर्क. Post it in the Telegram group, okay, not here. So let's start. Quickly, guys, match these words. No, but your speed is really amazing. Really amazing. Every day, like maintaining the same thing, that is really good thing. I really appreciate that. So yes, I think everyone is right because you all have given the same answer. So I think that everyone is right. And today, yes, Bharti, Geeta, Arno, Sanju, Dhiren, everyone gave quick reply. So that is really good. Okay. So let's start. Dog, as I told you yesterday also, it is a verb. It is not that pet animal. ये आपका एनिमल नहीं है जिसको आप अपने घर पे टेम करके रखते हैं, या स्ट्रीट डॉग्स. ओके, सो इट इज अ वर्ब हियर, डॉग. इट्स V2 form can be dogged also, as I told. There is a word called dogma. ठीक है, so all these are related only. So dogged basically we say follow or pursue something. ठीक है, dog also means to be very persistent, tenacious. Okay, so that also means dog. It can be used as an adjective also. And as an adjective, it can mean what? Tenacious. Okay, इसका मतलब tenacious भी होता है. So follow, pursue, all these are the synonyms. Chase, all these can be the synonym of the word dog. Good morning, Abhishek. So A will be matched with third. Summary. Summary, as I told, कि it also mean immediate. Summary का मतलब क्या हो जाता है? Immediate, instant,
at the moment. So that is the meaning of the word summary. So this is something different meaning of the word summary, even though it is a very common word, but different usages we saw. Okay. So B will be matched with fourth. Yearly, as I told, yearly basically we say strange, peculiar, bizarre, odd. So queer. So there are so many words for this word yearly. So it will be what? Peculiar, you can say. So C will be matched with 6. Peculiar, strange, odd, something in a strange manner. नहीं, ऑप्शन नहीं आया था और ये आता भी नहीं ऑप्शन वगैरह, एडिटोरियल में द हिंदू के तो बिल्कुल नहीं आता. Whimsical, whimsical basically we say capricious. Whimsical basically we say this fickle, impulsive. So changeable, all these are the synonyms of the word whimsical. So D will be matched with 7. Vitiate, basically we say impair, spoil something, distort, mar, all these are the synonyms of the word impair. So spoil, distort, mar, all these can be the synonyms. Okay. Ma'am, yearly is an adverb. Yeah, so it actually the exact meaning is in a strange manner. In a strange manner. Peculiarly. Okay, so that is the meaning. Yearly is an adverb. So yes, and the adverb form of this will be in a strange manner. Got it, Akshay? It is already provided, loyally. I have provided all the PDF July, August, September, October, November. Not December, I will share. Okay. So all the PDFs I have shared on my Telegram group. Now, E will be matched with 1. Innate, as I told, something that is natural, something that is inborn. You can even use the word intrinsic for this. So all these can be the synonym. Intrinsic, inborn, innate, all these are synonyms. So F will be matched with 5th. And bully, basically we said torment, intimidate someone, किसी को डराना, धमकाना, intimidate. So that is the meaning of the word bully. So G will be matched with 2. Clear, everyone? Please bring a editorial or an editorial. Please bring an editorial on auction. Definitely, and they will definitely, the moment you mail them, they will immediately give that. Inherited. Inherit, yes, you can say. Okay. So let's see the next slide for this. Good morning, everyone. Good morning, guys. Match these words. Very good, Akshay. Good job. So it is already matched. आपको कुछ match नहीं करना. Everything is already matched. Yes, it is 1, 2, 3 out of depth. Basically, we say in a situation that is beyond one's capabilities. क्या आप एक ऐसे situation में चले जाए जो किसी की भी capabilities के beyond, मतलब you cannot tackle that situation. So that is the meaning of out of depth. So it is 1. Play out means develop, happen, occur. All these are the synonyms of the word play out. That is also correct. So it is already matched. Whittle down means reduce the size or number of something. किसी भी चीज का size या number reduce कर देना. So that is called whittle down. So yes, it is absolutely correct. It is absolutely correct. uh, not one's cup of tea for out of depth. Correct, भारती. ठीक है. मैं क्यों नहीं जीत पाता? बिकॉज आपके बाकी सारे कमेंट ज्यादा हो जाते हैं ना. नो. सो अगर थोड़ा बाकी कमेंट्स हटा करके इफ यू कंप्लीटली फोकस ऑन दिस, सो डेफिनेटली यू विल बी द विनर वन डे. नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन, गाइस. आज के सेशन में ये जो वोकैब्स मैंने लिए हैं, बस ये वही है कि जबरदस्ती मैंने लिया है. अदरवाइज आई डिडेंट फाइंड अ सिंगल वर्ड जो मुझे लगा था कि नहीं ये होना चाहिए. मतलब ऑल वर्ड्स आर वेरी इजी. तो बेसिकली 2 ही 3, मतलब बहुत सर्च करने के बाद भी जो मुझे वोकैब मिला, सो 3 ही वर्ड मिले हैं मुझे. सो यू विल गेट ओनली 3 वर्ड्स टुडे. सो वन इज carcinogenic. So carcinogenic basically, as you know, something that has potential to cause cancer. ठीक है. So having potential to cause cancer, that is called carcinogenic. So इस वर्ड से आपको रिलेटेड भी हो जाएगा कि आर्टिकल किससे रिलेटेड होने वाला है. So it is going to be an important information. Okay. So carcinogenic means something that has potential to cause cancer. Okay.
Next word we have is juncture. So juncture is again a very common word. So yes, correct. So juncture basically we call point, time, moment, at particular time, at particular moment. So that is called juncture. Correct. The next word we have is indigenously. So indigenous, as you know, something that is originated, native you can say, कि मतलब जिसको हिंदी में स्वदेशी कहा जाता है. जैसे कोविड-19 में बहुत सारे वैक्सीन आते, they were indigenous vaccines. So indigenous basically we say originating, growing or produced in a certain region, native, ठीक है, homeland से related है, ठीक है. Now what do you mean by the word ingenuous? कुछ वर्ड मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज एडिटोरियल में तो वर्ड था नहीं. ओके, सो आप लोगों को मैं बता रही हूँ. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इनजेन्युअस? क्विकली, इनजेन्युअस व्हाट डू मीन बाय वर्ड? नो, वो इंडिजेनस है. सॉरी, इंडिजेनस आई एम सेइंग, इंडिजेंट. देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ingenious. नाउ क्विकली गाइस, अब देखिए आप लोगों ने सारे वर्ड्स मिला दिए हैं. एक्चुअली यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज 3-4 वर्ड्स. Indigenous, as you say, native, something that is prepared from your own area, your own land, so that's called indigenous. Okay. Indigent, basically we say poor pauper, that is called indigent. ठीक है, poor pauper, destitute, that is called indigent. Okay. But then there is a word called indignant. देखिए ये सारे वर्ड्स बहुत मिलते जुलते हैं, so please do not get confused. Now can anyone tell me the meaning? जो मैं पूछ रही हूँ उसको बताइए, otherwise it will be confused. It will be all mixed up. Can anyone tell me what do you mean by the word indignant? Quickly. क्या मतलब होता है indignant का? ये हमने बहुत बार देखा भी है. We have seen this word so many times. Not getting. Anger, very good. Indignant, basically we say anger at certain unfair thing. Very good. So मतलब आपके ऊपर मतलब कुछ आपके साथ unjust किया जाए, impartiality की जाए, and you get angry at that particular thing. So that is basically indignant. Yes, it is for anger. So anger at something unjust. Unjust, you know, कुछ unfair चीजें, unfair चीजें, impartial things आपके साथ की जाए, so that is you get angry at that. So that is called indignant. And I hope that this thing we have done so many times. Okay, yes, resentful, vexed, very good. So anger at something wrong, कुछ गलत हो जाए तो उसमें गुस्सा आता है. So this is called indignant. Indigent for poor, pauper, destitute. ठीक है. Indigenous, native. Ingenuous basically we use for naive, gullible, one who readily believes other. So naive you can say, innocent you can say, gullible you can say, because जो innocent person होगा वही दूसरों पे आसानी से भरोसा कर लेगा. So naive, gullible, innocent, all these are the synonyms for the word ingenuous. And when we talk about the word ingenious, it means very genius. So are these terms clear? Because they are very close terms. So generally student they get confused. कि generally वो infused हो जाते हैं, ठीक, confused हो जाते हैं. So I hope all these words are clear. Indigenous, native, ingenuous, naive, gullible, innocent, innocuous, yes, harmless, all these can be the synonyms. Indigent, poor, pauper, destitute, ठीक है. Ingenious, very genius, indignant, anger at something wrong. So when you get angry at something unjust, you can say impartiality, so that is basically indignant. So shall I proceed? तो आपके में vocabs नहीं थे, but ये 4 word आपने देख लिया. Yes. Now we have idioms and phrases, not homonyms. किसको homonyms आप कहेंगे? सारे नहीं है, कुछ हैं लेकिन नहीं सेम pronunciation का. We have different pronunciation, different spelling, so you cannot say homonyms. Now the first word we have is in earnest. So in earnest is a good phrase that we refer to a greater extent or more intentionally than before. कि कोई भी चीज जो आप पहले से ज्यादा इंटेंस के साथ कर रहे हैं, जैसे योर प्रिपरेशन,
सो योर प्रिपरेशन शुड बी इन अर्नेस्ट. ओके, तो जितना आप पहले से, जैसे 2023 में योर रेजोल्यूशन शुड बी दैट यू विल प्रिपेयर more intensely than before. So that is called in earnest. Okay. Next word we have is to that end. This is also an idiom. So to that end means for that reason. In order to achieve a particular aim. मतलब for that reason or in order to achieve a particular aim, we use this to that end. उन सारी चीजों के लिए हम लोग use करते हैं. For what is this question mark, Akshay? I didn't get you. So clear, everyone? In earnest means something that has been done to a greater extent or more intensely than before. Pauper and destitute almost they are same. Destitute basically we use for penniless. Matlab one who doesn't have even a single word, single money. Okay, so that is called destitute. And pauper also for poor. Okay. So to that end means for that reason in order to achieve a particular aim. So that is called to that end. Now, next phrasal verb we have is roll out. So, roll out simply means launch. To make something available or known to people for the first time. जब आप first time किसी भी चीज को मतलब public के सामने लाते हैं, so simple word is that roll out, launch something. ठीक है? तो might be कुछ अब वो sentence के ऊपर depend करता है. तो अगर ये होगा कि if a person doesn't have any single money, so you will have to use the word destitute. Okay? And pauper means poor. So destitute basically matlab you don't have even a single penny with you, so that is called destitute. There are so many words. Impoverished is there, destitute is there, pauper, all this. Summary also means dictator. Yes, it can have the meaning. Correct, Arju. Yes, it can have the meaning of dictatorial, totalitarianism. Lay down, next phrase is lay down we say formulate, draw up, prescribe. Okay, तो किसी भी law वगैरह को जब हम formulate करते हैं, उसको draw up करते हैं, so that is called lay down. So laying down is a very common word. Roll out भी हमने बहुत बार देखा हुआ है. Okay, so but लेकिन आपके जो idioms है वो आज अच्छे थे. ठीक है. अच्छा, prescribe you know to lay down to formulate something. What do you mean by the word prescribe? Prescribe and proscribe, these are two different words with two different meanings. So prescribe means suggest something, formulate something, that is called prescribe. But what do you mean by the word proscribe? Prohibit, very good. Prohibit, ban. So that is the meaning of the word. Yes, very good. Prohibit, ban, that is the meaning of the word prescribe. So try to, the moment you get these words ना, तो इससे मिलते जुलते जो भी word है उसको quickly recall कर लीजिए. So that is in that way you will not have confusion. Okay. Abolish, forbid, all these, yes, you can use. Now, guys, from Monday onwards, we are starting SBI PO mains plus descriptive batch. Okay, तो इसमें आपको mains और descriptive batch दोनों combined मिल जाएगा. Those who are interested, they can join this batch using my code Saba. If you do not want to join mains, you can simply join descriptive also. But I will suggest you SBI PO mains. अभी तक के सारे mains से सबसे highest level का होता है. You know, SBI is the IIT of banking examinations. You can say, okay. UPSC हो सकता है आपका banking exam का. So you need मतलब more preparation. जितना भी preparation आपने अभी तक किया है, so उस सबसे ज्यादा आपको चाहिए SBI PO में preparation. So please join this batch. यूज माई कोड सभा टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. और अभी तो आपको अगर आप कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट 55% डिस्काउंट अगर आपने परचेस कर लिया. वे also have this IBPS PO personalized interview batch. Those who are interested, they can join this batch also using my code SAVA. Now, very important course that we are launching from today itself. ये आज से ही start होगा. और अगर those who are going to enroll themselves in this batch, so the validity will be till March 2024. मतलब more than 1 year की आपको validity मिलने वाली है banking mentorship program में. And since this is the new batch, मतलब new course that we are launching, तो first batch जो होगा, I think कि वो सबसे privileged batch होगा because that will be the maximum things they will get. Okay. फिर here the special features of this personalized banking mentorship program is you will get 1:1 mentorship. मतलब आपके हर स्टेप पे आपको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आपको कहाँ प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट में आपको कितना और कंसंट्रेट करना है एग्जाम के लिए, एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट. सो यू हैव जॉइंड दिस बैच, दैट इज रियली गुड. So you are talking about banking mentorship, so that is really good.
यू विल गेट लाइव क्लासेस एंड मॉक टेस्ट. लाइव क्लासेस भी मतलब वो उस एक ईयर में, मतलब टिल मार्च 2024 वॉट एवर लाइव क्लासेस आर देयर ऑन ऑलीवुड प्लेटफॉर्म. सो यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दोज क्लासेस. सो बेसिकली दोज हु आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, उनके लिए दिस प्रोग्राम कैन बी अ मिरेकल फॉर देम. ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. इंटरव्यू बैचेस एंड मॉक इंटरव्यूज आर आल्सो कवर्ड इन बैंकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम. उसमें ये भी कवर्ड होता है. ठीक है, जैसे सुपर रिलेट में इंटरव्यू कवर्ड नहीं था, बट ये कवर्ड होगा आपके बैंकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में. बिसाइड्स एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग फिजिकल बुक्स ऑल्सो, कि जब कभी आप बैठे होते हैं तो यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. ओके, so those who have joined, that is really good. Do remember to use my code SABA for maximum discount on Oliveboard platform. ठीक है, आप मेरा कोड डेफिनेटली यूज कर लीजिएगा, और अभी लॉन्च है, सो इसमें आपको फ्लैट 40% ऑफ भी मिल जाएगा इफ यू यूज माई कोड SABA. Now, apart from these, those who want to join only classes and mock test, they do not want one-to-one mentorship and all these things. So definitely they can go for banking super elite, because ये भी एक अच्छा प्लान था अभी तक का. बैंकिंग मेंटरशिप के पहले अभी हमारा सबसे बेस्ट प्लान था, दैट इज बैंकिंग सुपर elite. So in banking super elite, you will get access to all the classes and mock test except mock interviews. Interviews नहीं included है बैंकिंग सुपर elite में, बुक्स included नहीं है, one-to-one mentorship included नहीं है, बट जितने भी क्लासेस और मॉक टेस्ट है वो सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है आपके सुपर elite में. So those who are interested, they can join banking super elite also using my code SABA. This is the right time to purchase anything on Oliveboard platform, because we have this Christmas sale. So Christmas sale में अगर आप कोई भी इंडिविजुअल कोर्सेज परचेज करते हैं, जैसे बैंक SBIPO का कोर्स लेते हैं, या फिर आप इंटरव्यू का कोर्स लेते हैं, तो यू विल गेट फ्लैट 55% ऑफ आफ्टर यूजिंग माई कोड SABA. In the same way for different subscriptions, so this is the value. Okay, so these are the values. अगर आप कोड यूज करेंगे तो you will get discount also. So as per your requirement, as per your need, you can definitely join the batch. But अगर जो लोग freshers हैं, if you are to take my opinion, so I will suggest you go for banking super elite. Sorry, banking mentorship program. ठीक है? This is my code SABA. So do remember to use this code SABA for purchasing anything on Oliveboard platform, whether it is SSC, banking, any course that you are going to purchase on Oliveboard platform. So do remember to use my code SABA for maximum discount. This is my Telegram channel. Join this Telegram. Foundation batch was to start from January 4th, but now it will start from January 11th. As I told, second week of January. So this, ma'am, I can't find. When did you join this, Lily? Anyways, I will share that PDF. Acha, one more thing. If there is anyone who has all these PDFs of all the months, ठीक है? Otherwise, I will share it by the end of the day. ठीक है? पूरे months का मैं combine करके आपको share कर दूंगी. ठीक है? जुलाई से लेकर के लेट मी कवर दिस दिसंबर ऑल्सो, तो पूरा 2022 का लास्ट 6 मंथ्स का vocab आई विल शेयर इन वन PDF ओनली. ओके, वो मैं कर दूंगी. एज अ सिंगुलर इट विल बी इट्स सोनाली, बट दैट टू डिपेंड्स. जनरली अगर आप उसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो इट विल बी इट्स ओनली, नॉट देयर. So now foundation batch will start from January 11th, and foundation batch तो guys definitely join कर लीजिएगा इंग्लिश के लिए. वैसे ये कंबाइंड होगा, बट इंग्लिश के लिए डू ज्वाइन दिस फाउंडेशन बैच, बिकॉज ये आपको मैंने सोच रखा है कि काफी आपको बता दूंगी, कुछ बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी. ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से, सो दैट आपको आगे चल के कहीं पर भी कोई बेसिक चीजों में प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज ये 6 महीने में मैंने देख लिया कि आप लोग सब कुछ कर लेते हैं, बेसिक में ही यू पीपल गेट स्टक. सो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ क्विकली रीड दिस आर्टिकल गाइस. वन सेकेंड. बहुत सिंपल आर्टिकल है, पढ़ लेंगे. मैं सेंड की थी डाउट ग्रुप में. सम टाइम्स आई मिस. वैसे मैं देखती हूँ जब फ्री रहती हूँ ना, तो मैं पूरा थोड़ा सा प्रीवियस देख लेती हूँ सोनाली. एनीवेज आई विल चेक, आप देख लीजिएगा. थैंक यू वामसी, थैंक यू सो मच. मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगी, और प्लीज रिपोस्ट इट. ठीक है, समटाइम्स आई मिस.
Okay, Sanju. Have you all read? फाउंडेशन बैच विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जामिनेशन स्लोली। वैसे ये बैंकिंग के लिए स्टार्ट होगा, बट सिंस इट इज फाउंडेशन तो इंग्लिश का बिल्कुल बेस बिल्डअप होगा आपका, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। ओके, सारे एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होगा। Now, see, this language, I hope that you might have found this language very, very simple, very easy. Okay? And this is the language that is expected in your descriptive paper. ये जो लैंग्वेज है ना आज के एडिटोरियल में, बेसिकली यही लैंग्वेज आपको जब भी आपका एसबीआईपीओ का डिस्क्रिप्टिव हो या किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव हो, सो दिस इज द लैंग्वेज दैट इज एक्सपेक्टेड। मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा वर्ड मिला होगा जो आपको लगेगा कि नहीं इसकी मीनिंग मुझे नहीं पता। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो फाइटिंग कैंसर। So basically, this article is on cervical cancer vaccine for girls. Now, government is trying to bring one vaccine that will be helpful to fight cervical cancer. Okay. So cervical cancer, I hope ki you know ki only basically girls are affected with this cancer. Okay. So it does not affect boys. It is basically girls, they are affected. Along with vaccination, screening must be done to detect early signs of HPV. सो एचपीवी इज द वायरस नेम, ठीक है, आपको ये पता चलेगा जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। सो द सजेशन इज दैट नॉट ओनली वैक्सीनेशन बट ऑल्सो स्क्रीनिंग मस्ट बी डन, कि वैक्सीनेशन के साथ साथ स्क्रीनिंग भी जरूरी है टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ एचपीवी। एचपीवी इज द वायरस दैट कॉजेज सर्वाइकल कैंसर। ओके, इंडिया हैज टेकन अ फाइट अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर इन अर्नेस्ट, with the central government announcing that it will roll out vaccination for girls aged between 9 and 14 years, between and between के साथ and दिया हुआ, it is correct, to देता तो गलत हो जाता, through schools. Now India has taken up the fight against cervical cancer in earnest. In earnest मतलब पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में और ज्यादा डेडिकेटेड वे में इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट में जो फाइट था उसको स्टार्ट कर दिया है, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसिंग दैट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग दैट इट विल रोल आउट, इट विल लॉन्च वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स एजेड बिटवीन 9 एंड 14 ईयर्स, कि वो 9 से 14 ईयर्स के बीच में जो भी गर्ल्स हैं उन सब के लिए वैक्सीन लेके आएगी, सो दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर थ्रू आउट देयर एज। ओके, थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू स्कूल्स। ठीक है, the decision comes at a critical juncture. Critical juncture means critical point. With a study in the Lancet published this month showing that India accounts for the highest number of cervical cancer cases in Asia, followed by China. Now, ये जो डिसीजन आया था ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे आया था, बिकॉज देर हैज बीन अ स्टडी मेड बाय द लैंसेट। ठीक है, इट इज अ मैगजीन, और यहाँ पर ये सर्वे आया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस होते हैं, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा केसेस कहाँ होते हैं, इंडिया में। एंड देन इंडिया इज फॉलोड बाय चाइना। ठीक है, उसके बाद किसमें होते हैं, चाइना में। More than 58% of all cases of cervical cancer and death globally were estimated in Asia. मतलब पूरे वर्ल्ड में 58% जो केसेस है सर्वाइकल कैंसर के वो एशिया के हैं, विथ इंडिया अकाउंटिंग फॉर 21% ऑफ केसेस एंड 23% ऑफ डेथ। और उसमें अलोन इंडिया में केसेस कितने हैं, 21% ऑफ सर्वाइकल कैंसर के केसेस इंडिया में है, एंड डेथ भी उतनी ही ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस कैंसर 23% डेथ होती है पर ईयर इंडिया में। ओके, फॉलोड बाय चाइना। इंडिया के बाद सेकंड नंबर एशिया में किसका है, दैट इज ऑफ चाइना। चाइना में 18% जो है लोग अफेक्टेड है एंड 17% डेथ होती है। तो भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है डेटा में। ओके, सर्वाइकल कैंसर इज अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कैंसर। ऐसा नहीं है कि ये एक दिस इज अ ड्रीड कैंसर जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो इट इज अ प्रिवेंटेबल कैंसर एंड ट्रीटेबल, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर इसको टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए तो। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस and there are vaccines which protect against carcinogenic HPV. Carcinogenic as I told causing cancer. ठीक है, तो ये जो है इन्फेक्शन से होता है किसके, एचपीवी वैक्सीन के, सॉरी वायरस के, that is human papilloma virus. So this is the virus that causes this cervical cancer. And there are vaccines, इसके लिए vaccines भी हैं जो इस कार्सिनोजेनिक एचपीवी से प्रोटेक्ट कर सकता है कैंसर कॉजिंग से। ठीक है, with more than 6 lakh women diagnosed with cervical cancer worldwide in 2020.
The World Health Organization laid down several guidelines that countries need to follow to eliminate it as a public health problem. Now, in 2020, overall 6 lakh women around the world they were diagnosed with cervical cancer. So it is really a challenging problem. Okay, so now WHO has come up with several guidelines. It has formulated several guidelines that each country needs to follow to eliminate this as a public health problem. Okay, so they can follow those guidelines and they can take preventive measures to avoid these cases of cervical cancer. According to the International Agency for Research on Cancer, the WHO has specified that countries must reach and maintain an incident rate of fewer than 4 new cases of cervical cancer per 1 lakh women a year. तो वो जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ये जो आया है इनके अकॉर्डिंग, तो WHO ने ये स्पेसिफाई किया है कि ईच कंट्री मस्ट मेंटेन एन इंसिडेंस रेट ऑफ फ्यूअर देन 4 न्यू केसेस, मतलब पर लाख वुमेन एक साल में 4 से कम ही केसेस होने चाहिए सर्वाइकल कैंसर के. ओके, to achieve that goal, now if we want to achieve this goal, it is necessary that 90% of girls will have to be fully vaccinated with HPV vaccines by the age of 15. So if there is anyone who wants to prevent this, okay, if you have to prevent this cervical cancer, so 90% of the girls they will have to be fully vaccinated by the age of 15. इसके पहले उनको vaccinate कर देना चाहिए. To that end, now what does this mean to at that end? It is a phrase. It means for that reason, right? The government's intent to introduce the HPV vaccine in universal immunization program is a welcome move. अब इस कारण से ये जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, इंटेंट हियर इज नाउ, इट मीन्स इंटेंशन, इंट्रोड्यूस द HPV वैक्सीन इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP. गवर्नमेंट के कुछ कुछ वैक्सीन हैं जो आपने देखा होगा कि हर जगह फ्री दी जाती है. पोलियो की वैक्सीन हो गई, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो गवर्नमेंट के वैक्सीन फ्री दी जाती है. So now if the government is going to introduce HPV vaccine also as a part of UIP, that is Universal Immunization Program, so this step is a welcome step. Okay, India's immunization network, as was evident during COVID-19, has worked well and diseases such as polio and maternal and neonatal tetanus have been eliminated. अब इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन नेटवर्क है, बेसिकली वैक्सीन करने का जो नेटवर्क है वो काफी अच्छा है. ये आपने कोविड के टाइम पर भी देख लिया था कि कोविड में भी वी हैव वैक्सीनेटेड सो मेनी पीपल. ओके, एंड इट हैज इवन हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग डिजीजेस लाइक पोलियो एंड टिटनेस. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन कैंपेन ओनली, वैक्सीन कैंपेन ओनली, वी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड दिस केसेस ऑफ पोलियो एंड टिटनेस ऑल्सो. The UIP, that is Universal Immunization Program, is one of the largest public health programs targeting over 2 crore newborns and 2 crore pregnant women annually and offer free vaccines for at least 12 diseases. तो UIP में बहुत सारे वैक्सीन हैं and these vaccines are given to newborn. आपने देखा ही होगा कि जैसे बर्थ होती किसी भी चाइल्ड की तो 1 ईयर तक उसको कितने ही स्टेजेस पे वैक्सीन लगते रहते हैं, एंड आउट ऑफ दोज वैक्सीन देयर आर मेनी दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे पोलियो हो गया, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन होती हैं जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. ओके, तो यूआईपी जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है. ठीक है, इट टारगेट ओवर 2 करोड़ न्यू बॉर्न्स एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन. इतने लोगों को ये टारगेट करता है. ठीक है, एनुअली, हर साल, एंड ऑफर्स फ्री वैक्सीन फॉर एटलीस्ट 12 डिजीजेस. और कम से कम 12 डिजीजेस के लिए फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करता है. To battle cervical cancer, India is expected to roll out the indigenously developed Saba vaccine by mid-2023. Cervical cancer को टैकल करने के लिए, इसके फाइट करने के लिए India is expecting that we are expecting that India will roll out a homemade vaccine, that is Saba vaccine, by mid-2023. इस टाइम तक ये वैक्सीन को रोल आउट कर देगी, लॉन्च कर देगी. It has received the Drugs Controller General of India's approval. ये सेरावेक वैक्सीन की बात हो रही है कि उसको जो है इसका अप्रूवल भी मिल गया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाज अप्रूवल, एंड हैज बीन क्लियर्ड बाय द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन फॉर यूज इन यूआईपी प्रोग्राम. तो इन सारी जगह से वैक्सीनेशन को ग्रीन चिट मिल गई है कि इसको आसानी से यूज किया जा सकता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में. ठीक है, vaccination will be provided primarily through schools, but importantly, the government has clarified that the girls who do not
go to school will be reached through community outreach and mobile teams. तो सबसे पहले ये जो बिकॉज 15 ईयर्स तक की गर्ल्स को देना है, तो ये स्टार्ट किया जाएगा स्कूल से. बट देयर आर मेनी गर्ल्स स्पेशली इन विलेजेस दोज हु डू नॉट गो टू स्कूल. तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं दिया जाएगा वैक्सीन, दे विल ऑल्सो बी रीच्ड थ्रू कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम एंड मोबाइल टीम्स. ओके, this is a vital step. It is a very, very important step because studies show that there is a link between cervical cancer incidence and human development index values with progressively lower rates observed as HDI rises. ठीक है, तो ये स्टेप बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पे स्टडी थी, रिसर्च किया गया था जिसने शो किया है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंट्स एंड ह्यूमन डेवलप इंडेक्स. कि मतलब अगर आपके सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंट ज्यादा होंगे तो आपका एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स वो भी आपका कम ही प्रोग्रेस करेगा. सो देयर इज अ क्लियर लिंक बिटवीन बोथ दीज थिंग्स. सो इफ वी वांट टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सो वी हैव टू फाइट सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो. Together with vaccination, screening programs must be conducted to detect early signs of disease to allow time for treatment. So, along with vaccination, screening test bhi hona chahiye so that we can detect this cervical cancer and we can treat it. Okay, so within time only we can treat this because it is a preventable cancer. इसको prevent किया जा सकता है, treat किया जा सकता है. Now, what is your duty? Editorial तो आपने देख लिया, ठीक है, informative editorial था. Now it is your duty to aware all the girls near you. आपके फैमिली में, आपके जो भी रिलेशन में, जो भी है नेबर्स में, you have to make them aware of this vaccine. ठीक है, बिकॉज आपको पता चल गया है तो मिड जनवरी से आएगी. सो जस्ट ट्राई टू सेव लाइफ ऑफ अदर गर्ल्स. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कहीं पर कोई कंफ्यूजन था ही नहीं. लैंग्वेज भी बहुत सिंपल थी, ग्रामर में भी मुझे नहीं लगा कि कोई मिस्टेक है. एवरीथिंग वाज ओके. ओके, सो चलिए क्विकली टेल मी व्हाट इज रॉन्ग हियर. What is incorrect here? Loyally is asking, ma'am, is 6 month vocabs enough for SBI clerk? Means no. See, ये जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं ना, इसका कोई आंसर नहीं. आई कैन से यस ऑल्सो, आई कैन से नो ऑल्सो. बिकॉज हो सकता है 6 मंथ्स में आपने इतने vocab कवर करिए और आपके SBI क्लर्क मेंस में सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाए, या हो सकता है उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए. पहली चीज गाइस, ये जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैम आईबीपीएस एसओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वोकैब कहाँ मिलेगा, वोकैब आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं. एसएससी और बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बस यही है. अदरवाइज आप बैंकिंग में पूछेंगे कि मैम आईबीपीएस पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, इनके लिए इंपॉर्टेंट वोकैब, तो कहीं पर भी ऐसा लिस्ट नहीं है. और अगर कोई दे रहा है तो दे आर सिंपली फूलिंग यू. वोकैब कब कौन सी कहाँ यूज हो जाए दैट यू नेवर नो. सो इसलिए द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन इंक्रीज योर वोकैबलरी. जितना ज्यादा आप कर सकते हैं आप अपनी वोकैब इंक्रीज कर सकते हैं. और वो कोई एग्जाम स्पेसिफिक वोकैब इंक्रीज नहीं होती कि एसबीआई क्लब के लिए मैंने ये वोकैब बता दिया, एसबीआई पीओ के लिए मैंने ये वोकैब बता दिया. गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड मींस इट क्लैरिफाइड और इट हैज टू क्लैरिफाई. इट हैज क्लैरिफाइड ना, गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड. आई विल टेल यू दैट. रिजल्ट कब आएगा? आ जाएगा इस साल, नहीं तो अगले साल तो आ ही जाएगा. आई नो 30 के प्रणव, बट द क्वेश्चन दैट यू आस्क ना कि मैम आईबीपीएस एसओ के लिए इंपॉर्टेंट वोकैब्स, तो सिर्फ एसओ के लिए कहीं से कोई इंपॉर्टेंट वोकैब्स नहीं है. आप जितना वोकैब्स आपको पता है, हो सकता है उसमें से सारे आ जाए, हो सकता है उसमें से कुछ ना आ जाए. सो व्हाट यू कैन डू, अब लास्ट 1 वीक में आप वोकैब कुछ भी नहीं कर सकते. तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ चीजें क्या कर सकते हैं, सिर्फ यू कैन इंक्रीज योर वोकैबलरी. अभी लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और आप अपने इसको करिए. अच्छा, बफ हो गया, कोई नहीं, लास्ट टाइम पे हुआ है, हो गया. इट इज ओके नो, नो वरीज गाइस, इट इज द एंड ऑफ द सेशन. Cervical cancer is caused by infection with the human papilloma virus and there are vaccines which protects. So simple, the antecedent is vaccines or vaccines plural hai, so we have to use protect. So we need a plural verb, it will be protect. So yes, everyone was correct. देखिए जिनका भी आईबीपीएस एसओ का एग्जामिनेशन है, आई एम टेलिंग यू दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट और मॉक टेस्ट पे आप फोकस कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ सब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट पे ही आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे. व्हाट इज दैट एरर बाय एन इन्फेक्शन, वेयर आर यू सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग? So error is in this part
Antecedent is plural, so we need plural verb. That's it. Okay. What is the tone of today's article? So tone तो मैंने बता ही दिया है. Overall, what is the dominating tone of today's article? पद्मावत, ये कहीं आर्टिकल में लिखा हुआ था. Informative. Tone is overall informative. इंफॉर्मेटिव. हाँ, समवेयर इट इज लॉडेटरी, जो गवर्नमेंट का स्टेप है. देखिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट देखेंगे, अब जैसे इंडिया के स्टेटस की बात करेंगे, तो इंडिया का जो स्टेटस था फर्स्ट पैराग्राफ में, दैट इज ऑफ कंसर्न. गवर्नमेंट का जो स्टेप है, दैट इज योर लॉडेटरी. ओके. बट ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट टोन, सो इट इज व्हाट, इट इज इंफॉर्मेटिव. क्लियर एवरीवन? इंफॉर्मेटिव आर्टिकल. एन इंफॉर्मेटिव आर्टिकल. यस, इंफॉर्मेटिव. सो बट पार्ट पार्ट की अगर बात की जाएगी, तो सो देयर इज प्रेज ऑल्सो, देयर इज कंसर्न ऑल्सो. Now, which line are you talking about this? Arju, with the human previous question, is it correct, ma'am? Previous question मतलब एक ही तो क्वेश्चन दिया मैंने. Yes, with the human, it is human papilloma virus. अच्छा, यहाँ पर आप बोले सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन. नो, बाय इन्फेक्शन with the human papilloma virus and there are vaccines, कि it is caused by infection with, इससे अगर आप infected हो जाते हैं तो you get cervical cancer. That is the sense you are getting. Okay, so I hope it is clear everyone. So with the human, it is absolutely correct, and this the is used for this virus. Human papilloma virus is the name of this virus. Okay, so that causes cervical cancer, so we are specifying it. It is absolutely correct. यहाँ पर एन इन्फेक्शन नहीं लगा सकते. कॉस्ड बाय एन इन्फेक्शन नहीं, कॉस्ड बाय इन्फेक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई गॉट योर डाउट. Government, the vaccine will be provided, it is correct, and the but important, the government has clarified that. Government ने clarify कर दिया, it is absolutely correct. Now what was your doubt? Reading, read a lot, Abhishek, read a lot. I will come to your doubt, guys. Now, those who want to leave, those who do not have any doubt, they can leave. But join 9 a.m. session. Again, today we are going to have an excellent session at 9 a.m. Okay? So, यहाँ पे सारी चीज होंगी. By infection is correct. See, an infection is not required. An infection we say when we are introducing something या किसी भी चीज की in general बात हो रही, so we use infection. And when anyways infection के पहले an नहीं लगेगा. Okay? So it is not required, Padmavati, infection. यहाँ पर आपका ए एन मीन्स व्हाट, एक इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन. वी आर सिंपली सेइंग दैट सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. दैट इज द सिंपल आंसर. Now, what is your doubt? Now, see, the government will be, the vaccination will be provided primarily through schools, but the government has made it, has clarified that girls, मतलब government ने पहले ही ये clarify कर दिया है कि जो girls स्कूल नहीं जाती हैं, उन तक भी वैक्सीन पहुंचेगी through community outreach program. So this has already been clarified by the government, so it is absolutely correct. Got it, Arju? The government has clarified, the government has already clarified this thing. Still the vaccination is not there, but government has already clarified that the girls who do not go to school, they will also be immunized, okay, through community outreach program and mobile teams. So that is the sense you are getting. So I think everything is sorted. Now please do join 9 a.m. session. So we will meet at 9 a.m. Like this session, सब्सक्राइब टू अवर YT चैनल एंड शेयर दिस सेशन गाइस. एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे YT चैनल. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. Now I won't do lots of comments. It's okay, Anu. You entertain others. That is good. You can comment. Okay. So thank you guys. I'm ending this session. Take care. Bye bye.